Good morning, students. Today we will discuss about sixth class mathematics lecture. In this, we will start our first chapter, that is knowing our number. So, in this, we will done comparison of number, ordering of number, increasing and decreasing order. Now, formation of number, greatest and largest, shifting of number, and introducing 1 lakh and above numbers. So, in the previous lecture, we will discuss Indian system of numeration. Now, today we will discuss about the international system of numerations. Now, take an example. So, when we write a number in the in the international system of numeral, we will divide these digits into three periods. These places into periods, and in one period, 3 places will be taken. So we will put commas in this system. So here 3 digits, comma, now 3 digits, comma, now here the 3 digits and comma. So what is this number? This is the unit place. This is the thousands, and this is the millions, and this is the billions periods. So these are the periods. These are the periods. Now we will see what is in the units. Units, first digit is ones place, second is tens place, and third is thousands place. इसके अंदर हमने जो हमारा एक नंबर होता है उसको पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, और वन पीरियड में हम 3 प्लेसेस को लेते हैं. वन पीरियड में हम कितने प्लेसेस को लेंगे? 3, और 3 का इंटरवल रहेगा. देन हियर इज द 3 digits, here is the 3 digits, and here is the 3 digits. One will be left here. Now in the second period, thousands, that is thousands, fourth digit is thousands, fifth is 10,000s, and sixth is 100,000s. In Indian system of numeration, this digit we will call as a 1 lakh, but in this we will not call a 1 lakh. This is called a 100,000s. So now the third period, that is million, 10 million and 100 million. This is the seventh digit, that is million. Eighth digits, that is 10 million, and ninth digit, that is 100 million. Now fourth is billion. This is the 10th place, that is 1 billion. This is the 11th place, that is 10 billion, and this is the 12th place, that is 100 billions. So this is the international system of numerations. हमने जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन था उसमें पीरियड्स को 2 प्लेस पहले पीरियड में 3 प्लेसेस को लिए थे, और उसके बाद में 2 प्लेसेस के गैप पे लिए थे. लेकिन इसमें हम 3 प्लेसेस को एक पीरियड में लेंगे. ठीक है. सो व्हाट वी विल कॉल दिस नंबर? दिस इज द 3 billion 572 million 893,921. So we will write this number, that this is the last number in this. This one is at unit place, so we will put here 1. Now at the second place, tens place पे 2 है हमारा. At the third place, 100 place पे क्या है? 9. At the fourth place, that is the thousands, क्या है? 3. फिर fifth place 10,000s, क्या है? 9. फिर sixth place 100,000s, that is 8. Now the seventh place, that is the million, 2. Eighth place, that is the 10 million, that is 7. And third that is the ninth digit is 5, that is the 100 million, and 10th is 3, that is the billions. So this is the
international system of numerations. Now we further see some questions, answers. So write the number given in the above table in figure and word as. So हमें जो above tables के अंदर जो दिए गए थे उनको क्या करना है, figure and words के अंदर लिखना है. So our first number is this. Our first number is this. See, what is the position of this number? This is at 100,000. So what will become this number? That is the 658,791. We will put comma here in this number. Now what is this number? This number is 4,532,087 and बीच में नहीं लगाएंगे, ये मैंने बोल दिया इसी, सॉरी. What we will call this 4,532,087. This is the number that we will call in, that is the 4,532,087. Sorry, 87 है वहाँ पे. So by this place international system of numeration, we will write a number in the international system of numerations. So in the international system, only 3 period ones, thousands and million are used to group the first 9 places. The places are grouped in threes. जो हमारे places को group करते हैं हम, वो 3 threes में करते हैं. Now, how we use commas? How we use commas? Commas or periods. We use period or commas in large number. This system is putting period is different in Indian and international system. So, जो हमारा कोमा पुट करने का, दैट इज द पीरियड को जो हमें शो करने का जो एक मेथड है जिसको हम कोमा लगा के शो करेंगे, ठीक है, वो हमारा इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम में अलग अलग रहेगा. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इंडियन सिस्टम. इन इट कोमास आर प्लेस्ड इन फिगर, द फर्स्ट बीइंग आफ्टर द 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट एंड सेकंड ऑनवर्ड आफ्टर द एवरी 2 डिजिट्स. सो जो हमारा फर्स्ट कोमा लगेगा वो हम किसको, कितने डिजिट्स को छोड़ के लगाएंगे, 3 डिजिट्स को छोड़ के. सो हियर वी विल पुट कोमास, हियर वी विल पुट कोमास. आफ्टर दैट 2 डिजिट्स वी विल लेफ्ट. यहां पर हम 2 डिजिट्स को क्या करेंगे, छोड़ेंगे. तो यहां पर हमने 2 डिजिट्स को छोड़ के क्या कर दिए, कोमास लगा दिए. तो ये आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए उस पर आप कोमा लगा सकते हो. जैसे एक एग्जांपल मैं मेरी तरफ से लेता हूं. So first of all, we will left 3 digits. That is the 3 digits को छोड़ के हम पहले एक कोमा लगाएंगे, उसके बाद में 2 digits, उसके बाद में 2 digits. So by this method, we can put the commas in the Indian number, So this is the method of putting the commas, and this is the your international system of numeration. So you have to write this place value charts on your notebook and you have to learn this place value charts. So this is your today's homework and you have to practice some question answer of the next exercise. आपको जो next exercise है उसके कुछ question answer को practice करना है. जितने हो रहे हैं, थोड़ा जो बेसिक रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. और आपको ये टेबल राइट करनी है अपनी कॉपी पे एंड इसको क्या करना है, लर्न भी करना है. सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर एंड दिस इज योर टुडेज होमवर्क. थैंक यू.